Three, Three, two, two, one. one. Hey everyone, welcome to 44th episode of Slice of the Lifeless podcast. What's that noise in the background एकदम से? पटाखे फूट रहे भाई, पता नहीं क्यों फोड़ रहे एकदम से। What? But वाह, दिमाग जैसे मेरा काउंटडाउन खत्म हुआ वैसे एकदम मतलब ऑन सिंक पटाखे फूटना शुरू हो गए बाहर। damn. So, Uddu, you finally bought a new PC, it seems. Yes, I feel like there's a weird story behind it. Okay, from what I yes, understand, you went मेरे to a place to kind of figure out, just look at what components cost, like, and everything. I mean, I guess you can yes. take it from here. Okay, so the last time we talked, I don't think उस टाइम मैं मेंशन कर रहा था कुछ राइट पीसी के बारे में। वी वर डिस्कसिंग कि कौन सा लैपटॉप लेना है एंड वी थॉरोली रिसर्च दैट एक्चुअली कि कौन सा लैपटॉप लेना है। आई वाज प्रीटी मच सेट ऑन गेटिंग Lenovo Legion और LOQ, like one of the two. And then I called my uncle, उनसे एक बार कंफर्मेशन लेने के लिए कि हाँ ये लेने का सोच रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक। एंड ही सेड तुम्हें इतना महंगा लैपटॉप क्यों ले रहा है। सेट मेरे को गेमिंग के लिए चाहिए। बोले गेमिंग के लिए तुम डेस्कटॉप लो ना, तुम्हें सेम प्राइस पे ज़्यादा पावर मिलेगी, ज़्यादा अच्छा बड़ी स्क्रीन पे खेल सकते हो। मैंने कहा कि हाँ मैं भी इनिशियली डेस्कटॉप ही सोच रहा था, बट आई आई डोंट थिंक मैं पूरा समझ के प्रॉपरली ले पाऊंगा। मैं ट्राई करा बट मेरे को ओवरवेलमिंग लगा। बोलता है अरे नहीं नहीं, ट्राई तो करो, करने का एक दो हफ्ते स्ट्रगल करोगे फिर समझ में आएगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। मैं एक दो हफ्ते तक मैं रिसर्च करा, पहले मेरे को फिर से ओवरवेलमिंग लग रहा था, बट एक्चुअली आई थिंक द मेन प्रॉब्लम इज कि यू डोंट फाइंड अ सिंगल सोर्स कि जहाँ पे तुम्हें ऑब्जेक्टिव ट्रुथ मिल रहा है कि हाँ ये जीपीयू बेटर है, ये सीपीयू उसके साथ बेटर है, ये टीयर लिस्ट है जीपीयू की, ये टीयर लिस्ट है सीपीयू की। देयर इज नॉट अ सिंगल प्लेस जहाँ पे तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यू हैव टू लुक अराउंड मल्टीपल प्लेसेस टू गेट द लाइक एक्चुअल की क्या आइडिया है, कौन सा जीपीयू की रैंकिंग है और कौन से वर्थ मतलब मनी का है, कौन सा सीपीयू कौन सा जीपीयू के साथ जाता है, कौन सा पावर सप्लाई चाहिए, कौन सा फैन चाहिए। You have to put in the effort. And yeah, it kind of made me think कि about life कि जैसे एक रैंडम चीज में you get so invested and you don't even and like realize कि अब तुम्हारा पूरा माइंड उसी में लगा हुआ है constantly for this duration, and once it's done it feels so weird. जैसे like how you feel after a movie, right? कि you were so invested in that movie and when the movie ends you realize that none of that was real. Do you ever feel that like after a movie or an anime? Uh, you feel like it wasn't even No, real? not real, but like you were so invested into something, but like now it's over and It's like when I watch long shows uh, particularly, and it's like um a kind of a warm kind of show, a comforting show, and there are a lot of characters in this show. I've when that's over, I kind of it almost feels like I've lost some friends or yeah, something. Like but that's what I. yeah, that's one thing. But uh, like sometimes you get invested into something without even realizing, and like it takes away, not takes away, but like you invest your time into it, right? But what can I say, like you पूरा समय बीत Are जाता है you पूरा, वो चले जाता है तुम्हारा टाइम एंड यू रियलाइज कि तुम्हें पता भी नहीं चला कैसे पूरा टाइम चला गया है। You were so invested into it, like I don't, it's not a bad thing, but like um are you trying to say that
Now that you have bought the PC, it feels anticlimactic. Kind of. Yes. Like I was enjoying the process. Like at the end, I just thought ki ha, now I am satisfied in my understanding and I don't want to buy it anymore. Okay. How much? Okay, Mhm. इसके पहले go on Yes, with the yes. So story, I for a guess. week, I was like just looking into अलग-अलग sources से क्या क्या कैसा होता है everything. But मैं ऑफिस भी जा रहा था and I just couldn't focus on my work. मैं सोच ही नहीं पा रहा था मेरे काम के बारे में. I was like constantly thinking about कि हाँ इसका क्या होता है, इसका ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है, इसका और क्या रिव्यू पढ़ना है, what does it match with. Like I literally could not focus on my work. You know, I have told you about this, right? कि जो इस चीज मेरे साथ कोई बहुत कॉम्पिटिटिव टाइप का गेम है उसमें, इसलिए दैट्स व्हाई आई डोंट प्ले कॉम्पिटिटिव गेम्स, कि दैट आई गेट इन्वेस्टेड अ लिटिल टू मच इन दोज in the same way, and like they are pretty much never ending. So because ऐसे अभी पीसी खरीद लिया है and that's it, right? I don't need to think about it anymore. But if I do the same with a game, the game can just go on, and I would invest months and months of my life Mhm. into that. So it was like that kind of thing कि मैं पूरे टाइम इन्वेस्टेड था उसमें. एंड देन मैं अभी मेरे पेरेंट्स गए, बोध गया गए थे, आ गए अभी, जस्ट आए अभी वो. एंड क्योंकि वो बाहर गए हुए थे तो मैं वीकेंड में उनके यहाँ चला गया, मेरे मामा के यहाँ. एंड मेरे ये मामा को से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, राइट, कि क्या क्या मेरे को जीपीयू सीपीयू समझ में आया. एंड ही सेज कि तुम एक बार सिल्वर मॉल होके पता करके आओ वहाँ पे क्या प्राइसेस चल रहे हैं, सबका आइडिया ले लो एक बार. आई थॉट कि हाँ दैट्स अ गुड आइडिया. एंड देन आई गो देयर एंड हैव यू, या आई थिंक वी हैव वेंट टू सिल्वर मॉल, राइट? तुम्हारा कुछ वो ठीक कराना था, फैन वगैरह. Yeah, yeah. मेरे फोन का फोन का कुछ नहीं, आई देखना थिंक. था शायद. हाँ. ओ राइट, लैपटॉप का. So I या. go there and I think, मतलब स्टार्टिंग में बस मैं सोचा कि चलो बस ऊपर ऊपर से देखता हूँ मैं पहले कौन कौन सी शॉप है, क्या क्या हो रहा है वहाँ पे. एंड इट्स सच अ बिग कॉम्प्लेक्स, लाइक एज यू कीप गोइंग इनसाइड इट देयर इज मल्टीपल पूरे फ्लोर्स एंड It goes deep, and it's like it feels like it's a place हाँ. out of its time. It's like the kind of place you would expect to see like 10-20 साल पहले, like 15-20 साल पहले, and you didn't know that this world still existed. सो लाइक जब मैं जा रहा था देन एट दैट टाइम आई डिडंट थिंक एनीथिंग कि मैं वहां जाके क्या पूछना है क्या बोलना है. आई जस्ट थॉट कि मैं वही जाके फिगर आउट करूंगा. बट वंस आई वाज देयर आई वाज फीलिंग काइंड ऑकवर्ड कि मैं क्या बोलूं इनसे, लाइक व्हाट डू आई डू. तो मैं ऐसी एक सामने शॉप दिखी, सोचा कि ठीक है यहाँ जाके बात करता हूँ. मैं गया अंदर, एक भैया काउंटर में बैठे हुए हैं. मैं उनसे ऑकवर्डली पूछा, भैया RTX 5060 Ti मिलेगा? He said what? Yes. What? Seriously? जैसे वो पेंसिल पेन नहीं मांगते स्टेशनरी के शॉप जाके. वैसे मैं जीपीयू पूछ रहा हूँ उनसे. ही लुक्स एट मी लाइक ऐसे कंफ्यूज हो गए कि व्हाट इज रॉन्ग विद दिस पर्सन. वो बाजू में देखते हैं एक ऐसे मिडिल एज अंकल फोन पे बात कर रहे हैं जोर जोर से एक जगह बैठ के. वो लुक लाइक वो ओनर है उस जगह के, उस शॉप के. एंड उन उनसे उनने पहले पूछा, वो अंकल ने इग्नोर कर दिया, वो फोन पे बात करे जा रहे हैं. वो अंकल की वाइफ बाजू में खड़ी थी अपेरेंटली, वो मेरे को देख रही. एंड देन वो अंकल को घूर के देखती, कस्टमर आया तुम फोन पे बात कर रहे हो. ऐसे पूरा ग्लेयर करती है उनके ऊपर, वो अंकल के ऊपर. तो अंकल बोलता अच्छा एक सेकंड रुको अपने फोन पे. वो पूछता हाँ कौन सा जीपीयू चाहिए तुम्हें. मैं बोला, फिर से रिपीट करा. वो ऐसे तो 2 सेकंड सोचते फिर बोलता 60,000. नाउ आई एम स्टैंडिंग देयर एंड जो उनने प्राइस बोला है इट इज लाइक 10,000 अबव ऑफ व्हाट इट इज अवेलेबल ऑनलाइन. आई वाज लाइक कि हैं, देयर इज Hmm. नो पॉइंट ऑफ इसको मतलब कुछ करने का. बट मैं बैकपैक लेके गया था. ओके, मैं बैग में अपना जैकेट लेके गया था.
बट देन सोचा कि अब मैं करूँगा तो क्या करूँ यहाँ आके? सो आई थॉट कि मैं एक-एक शॉप का, वहाँ पे जीपीयू कितने का मिल रहा है, प्रोसेसर कितने का मिल रहा है, सारे कंपोनेंट एक तो कौन-कौन से अवेलेबल है, क्या प्राइस है, उसको नोट डाउन करता जाऊँगा। तो मैं ऐसे क्लमज़ी तरीके से अपने बैग से नोटबुक निकालता हूँ और लिखता हूँ कि हाँ, ये शॉप है, ये शॉप में इतने का मिल रहा है। फिर मैं पूछता हूँ प्रोसेसर, व्हाट द फिर फक। वो सोचते थोड़ा वो मेरे को ओवर प्राइस्ड एक वो बताते हैं, वैल्यू बताता है उसकी। मैं ऐसे 2-3 लिखता हूँ एंड देन आई रियलाइज़ कि यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलने वाला काम का। मैं बोलता हूँ कि अच्छा ठीक है, मैं आके देख। Man, you love this shit, don't you? Don't. मैं गया थोड़ा Fuck. एंड थोड़ा, अब मैं मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी और जितना ऑकवर्ड लगा था मेरे को वहाँ पे, बिकॉज़ वो एक ऐसा लगा उनका सबऑर्डिनेट टाइप का वहाँ बैठा हुआ है, हू नोज़ नथिंग अबाउट सीपीयू और जीपीयू फ्रॉम द वे ही लुक्ड एट मी व्हेन आई आस्क्ड 5660 Ti। वहाँ पे अंकल है, उनकी वाइफ वहीं पे खड़ी हुई मेरे को देख रही है ऐसे, लाइक, और मतलब व्हाट डू आई से इवन। You think उसकी वाइफ ने उस रात को अंकल को डांटा होगा कि what the fuck man, कस्टमर की नोटबुक निकाला, नोट की और चला गया। मैं तो तुमसे फिर मैं आगे हैंडल नहीं देख रहा हुआ हूँ ये। आगे शॉप्स में एंड मैं ऐसे चक्कर लगा रहा हूँ एमलेसली, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। आई एम सपोज टू बी डूइंग लाइक आस्किंग प्राइसेस समथिंग, बट आई एम अनेबल टू डू दैट बिकॉज आई एम फीलिंग ऑकवर्ड नाउ फ्रॉम माई दैट एनकाउंटर। फिर मैं अपने आप को स्टील अप करा, मैं सोचा कि Yeah. ठीक है, लेट्स ट्राई वन थिंग। मैं बॉटम फ्लोर से स्टार्ट करूंगा एंड एक एक शॉप पे जाके, मतलब जहाँ पे ये सब दिख रहा है जीपीयू का, वन बाय वन मैं सारे शॉप्स कवर करूंगा। यप। What the fuck? यस। Is एंड this सो आई your स्टार्ट। ideal पहले मैं पूछा Saturday? जीपीयू मिलता है, उनके बैकग्राउंड में दिख रहा है मेरे को जीपीयू रखे हुए हैं, Okay. वो बोलता है नहीं मिलता जीपीयू। आई डोंट नो, उनने मना कर दिया मेरे को स्ट्रेट अप। वो पता नहीं हमने कोई गेम हम खेल Wait, रहे थे why? मोबाइल पे, क्या कर रहे थे, उनने इग्नोर कर दी। मैंने कहा भाड़ में जाए। मैं एक अगली शॉप पे गया एंड देन मैं That's उसका weird. नाम देखा। इट वाज कॉल्ड पीसी एक्सपर्ट। एंड यू नो, बिफोर कमिंग टू सिल्वर मॉल, मैं रेडिट पे देखा था कि सिल्वर मॉल में कहाँ कहाँ कौन सी शॉप फेमस है, एंड आई लाइक saw this name there mentioned of this particular shop, and it is famous for building custom PCs here. Mm. तो मैं पूछा उनसे कि हाँ मिलेगा ये जीपीयू, ही सेड हाँ ये मिलेगा। फिर मैं पूछा रैम मिलेगा, वो बोले हाँ रैम भी मिलेगा, एसएसडी मिलेगी, हाँ एसएसडी भी मिलेगी, सब मिल रहा है यहाँ पे, पूरा पीसी बिल्ड करके देंगे। हाँ, या पूछा जीपीयू का Prices. प्राइस इज लोअर देन व्हाट मेरे Prices. को मिला ऑनलाइन। नहीं पूछा? दैट्स गुड। रैम का प्राइस is more than what I saw online. Okay. Mm. And one weird thing which happened was मैं एक वेबसाइट, यहाँ आने के पहले मैं Okay. ऑलमोस्ट 2 हफ्ते सब मैं देख रहा हूँ राइट, ये सब पार्ट्स वगैरह। एंड एक वेबसाइट है पीसी प्राइस ट्रैकर नाम का, उसमें आप सारे पार्ट्स को एक जगह पे आप कंपेयर कर सकते हो, अलग अलग पार्ट्स को, पूरा आपको ओवरऑल क्या प्राइस आ रहा है पूरे बिल्ड का, वो पूरा करके दिखा देता है। एंड वन थिंग विच आई नोटिस्ड कि जो एसएसडी का प्राइस है वो पहले 4000 था, बट 4 दिन बाद वो अपने आप ही 6000 हो गया उसका प्राइस। एंड आई थिंक व्हाट द हेल, Mm. व्हाट हैपेंड, कोई बग होगा कुछ, या फिर जिस जहाँ का वो ट्रैक कर रहा होगा वहां पे उनने कुछ प्रॉब्लम होगी। That's weird. बट इट टर्न्स आउट वो वो भैया ने मेरे को बताया कि ये जो एसएसडी और रैम का प्राइस ये बहुत स्पीड से बढ़ रहा है अभी, और रोज 500 रुपए बढ़ रहा है ये प्राइस, बिकॉज ये जो रैम और एसएसडी है अभी एकदम से एआई की जो कंपनीज है वो उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग के लिए बल्क में स्टॉक लिए, पूरा बल्क में स्टॉक लिए, इसलिए उनके जो सप्लायर है उनका प्राइस एकदम से बढ़ गया है। एंड ये जो एसएसडी और रैम बनती है वो स्लॉट से बनती है, मतलब वो कॉन्स्टेंटली उनका सप्लाई नहीं आता रहता है। देखो पता ना, हर एक का एक वो आता है, क्या बोलते हैं, वर्जन आता है, या वर्जन नहीं क्या बोलेंगे,
जनरेशन आती है, राइट? i5, i6, i7, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो वो कॉन्स्टेंटली एक जनरेशन की नहीं बनाते, वो एक जनरेशन की बनाते हैं, मतलब एक जनरेशन Mm, डेवलप होती है और फिर उसके एक साथ yeah. बहुत सारे एसएसडी बनती है और फिर एक साल तक कुछ नहीं बनता है। फिर एक नया जनरेशन वो उसको डिजाइन करता है, उसके एक साथ पूरा बल्क आता है, वो यूज अप हो जाता है, राइट? तो उसका मतलब कॉन्स्टेंटली प्रोडक्शन नहीं होता रैम एसएसडी का, वो एक बार होता है, वो एक साल तक चलता रहता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। बट बिकॉज ये रैम एसएसडी का एक साथ एआई की कंपनीज ने खरीदा है, तो अब 6 महीने तक कुछ नहीं आने वाला नया सप्लाई रैम एसएसडी का, तो द प्राइसेस आर गोइंग टू गो अप फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। पहले मेरे को लगा, स्केप्टिकल लगा इनकी बात को कि ये ऐसे मेरे को महंगा देने के लिए तो नहीं बोल रहे। दैट इज पहली बात तो महंगा, दूसरी बात जो रैम उनने दिया, मैं जो लेके गया था उसकी एक होती है कैश लेटेंसी, मेरे को चाहिए था 30 कैश लेटेंसी। वो बोले कि हमारे पास 30 वाला है ही नहीं, हमारे पास 32 वाला है। बट उन्होंने कहा कि उतना फर्क नहीं पड़ता, अभी जितना प्राइस हो रहा है इस पे ये चलेगा, What इतना is फर्क नहीं that? पड़ेगा। बट आई I रेड कि don't उससे know फर्क what that पड़ता है, is. और मेरे को वही चाहिए था जो मैं लेके गया था। आई डोंट डिडंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज। कैश लेटेंसी बेसिकली Is bigger कितनी स्पीड better? से Is रीड the कर रहा है, bigger समथिंग लाइक number दैट, आई डोंट better? नो बट लाइक इट इज इम्पोर्टेंट उसके। Uh, अच्छा ठीक. नो, स्मॉलर इज बेटर, यू वांट एज लेस एज पॉसिबल। Mm. So he was suggesting me a verse than what I was asking. So मैंने कहा ठीक है, मैं थोड़ा देर से आता हूँ जगह पता करके। Then I I go, I think I एंड तेरे को पता है remember. वहाँ Yeah. सिल्वर मॉल में सोफे लगे हुए हैं, लाइक बाहर साइड में, फॉर सम रीजन। एंड दैट्स रियली नाइस, क्योंकि वहाँ पे मैं दिन भर रहा हूँ उस दिन सैटरडे को, एंड ऑफन टाइम्स में जाके इस सोफे में बैठ के आराम से मोबाइल पे रिसर्च कर रहा था, नेट पे पढ़ रहा था। एंड यू नो व्हाट, रैम एसएसडी के प्राइस एक्चुअली पिछले 2-3 महीने से बढ़ते जा रहे हैं, एंड बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। लाइक यू कैन गो टू पीसी प्राइस ट्रैकर, उसमें अलग अलग जितने सप्लायर्स है उसके सबके उनने प्राइस ट्रैक करते रहते हैं Mm. ओवर द मंथ्स, एंड दे हैव एक्चुअली वेंट अप अ लॉट। Okay. सो लाइक ही वाज नॉट किडिंग, एक्चुअली उनके प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं। बट एनीवेज, ये एक दिखा मेरे को। एंड देन एक अनदर जगह थी जहाँ पे मेरे को बोला गया था कि मैं सबसे पहले जाऊँ, बिकॉज करते वहाँ पे हैं मेरे पापा अभी काम करते या थे फिर पहले करते थे? उस जगह पे, Okay. एंड उनके जान करते थे। अभी वो दूसरे, पहले वो लेनोवो, अभी लेनोवो का देखते हैं, पहले वो एमएसआई वगैरह का देखते थे। एंड अभी आई डोंट थिंक वो डायरेक्टली उनसे मतलब वर्क करते कि वो कुछ डिस्काउंट वगैरह दे पाए इस टाइप का। बट एनीवेज, ये पापा ने सजेस्ट करा था वाली जगह, एक सिग्मा पेरिफेरल नाम की, जो सबसे पहली शॉप है सिल्वर मॉल पे जाने की और सबसे बड़ी शॉप है। आई डिडंट गो देयर बिकॉज आई फेल्ट ऑकवर्ड कि मेरे को पहले तो बताना पड़ेगा कि मैं, ये मेरे पापा है, उनका मेरा कांटेक्ट है, बिकॉज दैट वुड प्रोबेबली Mm. help me in bargaining, but Yeah. I was already feeling It's so awkward weird. and I don't like जीपीयू के लिए bargaining. बार्गेन 60,000 का मिलेगा, But anyway, 50 में लूंगा. yeah, I know, right? Anyways, मैं बाकी सब देख लेता, I think कि okay, Fuck, इसको भी देख ही लेते I हैं if I'm forgot to checking everything then. record. And what the hell? देता हूँ, बाकी देख लेना तू. हेलो हेलो. हाँ, Okay. Yes. तो I check in Sigma peripherals, एक सरदार जी बैठे होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली फोन पे लगे हुए हैं। I talk with him. ही सेज, उनसे पूछता हूँ कि ये वाली रैम अवेलेबल है क्या, वो बोले हाँ है। ये एसएसडी है क्या, हाँ है। एंड दे लाइक ही डिड कंफर्म कि हाँ उनके प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं अभी। लाइक मैं उनसे मतलब ये थोड़ा जानना चाहा, उन्होंने बोला कि हाँ, उनसे मैं पहले प्राइस पूछा, मतलब मैं उनको भी कुछ बताया नहीं मेरा अभी तक एक्सपीरियंस, आई जस्ट आस्क हिम कि इसका क्या प्राइस है इस रैम और ये एसएसडी का। ही सेज, ये टेल्स मी द प्राइस एंड देन ही सेज कि ये आज प्राइस है। आई कैन नॉट टेल यू कि ये मंडे को सेम प्राइस रहेगा, क्योंकि
रैम एसएसडी के प्राइस बहुत बढ़ रहा है. सो इवन if I didn't prompt him, he like already said the same thing. At this point, I did not plan on buying anything. But looking at कि it is obvious कि RAM और SSD के prices बढ़ रहे हैं, I decide कि I should at least get them right now. Because first of all, I don't know वो stock में भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे बाद में. Second of all, उसका prices भी बहुत significantly बढ़ सकता है आने वाले दिनों में. That's why I decided to buy it. वेट, यहाँ पे प्राइसेस थे क्या? जीपीयू का क्या प्राइस था? ज़्यादा था, कम था? Comparatively, जहाँ वो देखा था मैं, कौन सी जगह, पीसी एक्सपर्ट वाले, उससे 2000 ज़्यादा था. हम्म। बट आई आस्क्ड हिम उनके इस बारे में कि ये नीचे आपका दूसरी शॉप है वहाँ पे 2000 कम दे रहे हैं. एंड ही सेड कि तुम उनसे आके बोलो कि तुम्हें जीएसटी का वो दे, बिल दे, एंड देन ही विल सडनली इंक्रीज द प्राइस बिकॉज ही इज टेलिंग यू नॉन जीएसटी प्राइस. आई विल गिव यू अ फुल जीएसटी बिल. एंड उसका बेनिफिट ये होता है कि इफ़ यू हैव अ फुल जीएसटी बिल यू कैन क्लेम इट, राइट. हम्म। हाँ, करीब 15,000 करीब का हमारे से भी जीएसटी बना टोटल उसमें बाय में, तो वी कैन क्लेम इट. क्लेम इट? यस, ये व्हाट डू यू मेरे मीन मामा कुछ क्लेम? बताए थे मेरे को. आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स बट वी कैन क्लेम जीएसटी व्हाट द apparently. फक? वेट, यस, व्हाट? आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स. मेरे व्हाट? मामा बोले कि कोई लाइक तरीका होता है कंपनीज के थ्रू यू कैन क्लेम जीएसटी. I mean, I understand like how write-offs sort of work if you're running a business and you kind of have to buy things for that business. In that case, you can off the write it off, like उसका tax नहीं देना पड़ेगा. Because it's, I don't know, man. आई थिंक ये मामा जो बताए थे इट इज लाइक अ वर्क अराउंड Hmm. फॉर दैट. लाइक बट जैसे वो सरदार जी बोले उससे लगा कि हाँ बहुत लोग करते हैं ये महंगी चीजें खरीदते समय. Okay. सो दैट वाज वन थिंग. एंड फिर उन्होंने मेरे को वो बताया, कूलर बताया, मैं बजट लेके गया था 1,30,000 का. एंड उसमें मैं कुछ कुछ अपना डिसाइड कर रहा था कि आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन फैन, आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन जो पावर केबल है बिकॉज उससे नेक्स्ट पावरफुल वाली इज थोड़ी एक्सपेंसिव है. जो नीचे वाले पीसी बिल्ड वाले में कह रहे थे बहुत सारे कंपोनेंट्स थे ही नहीं उनके पास जो कंपनी का मैं देख रहा था. लाइक इवन इफ दे हैड दैट जीपीयू व्हिच आई वांटेड दे डिड नॉट हैव द कंपनी. वो उनकी कोई ऑफ ब्रांड टाइप की कंपनी थी व्हिच वाज नॉट वेल नोन. इसमें जीपीयूस में अलग अलग कंपनी आती है, राइट. जोटैक हुआ, फिर फलाना ठिकाना बहुत सारी कंपनियां हैं. किस बट में? जीपीयू में, सीपीयू में, नॉट सीपीयू आई गेस, बट जैसे जो जीपीयू है वो तुम्हें अलग अलग कंपनी से मिल सकता है. What do you mean? सेम जीपीयू, सेम 5060 टी तुम्हें अलग अलग कंपनी से मिलेगा. कौन सी अ, कंपनी से? होती है, जस्ट लुक इट अप, सर्च What 5060 टी and you will find is? 15 different companies which give the same thing. Isn't it just a product designed by It is NVIDIA? no, it is like saying कि जो तुम लेनोवो का लैपटॉप ले रहे हो बिकॉज इट हैज इंटेल चिप, द होल लैपटॉप इज ऑफ इंटेल. No. What? या हर इसकी जीपीयू की अलग अलग कंपनी होती है. Wait, I didn't know that. What the fuck? Did you एसस know की this? मिलेगी तुम्हें, मतलब वो तो रिसर्च करते करते पता चला मेरे को. एसस हुआ, Hmm. गीगाबाइट हुआ, एंड इसी के टाइप के जोटैक एंड स्टफ. तो बहुत सारी कंपनीज है That's एंड उनके weird. अलग अलग वो होता है, रिव्यूज होता है एंड स्टफ, राइट. वन गुड थिंग अबाउट दिस सरदार जी शॉप वाज कि उनके पास टॉप कंपनीज थी जो मेरे को चाहिए था. लाइक इवन इफ इट कॉस्ट अ लिटिल मोर एटलीस्ट इट वाज रिलायबल. मतलब Hmm. ही ओनली केप्ट टॉप ब्रांड्स. सेकंड ऑफ ऑल उनके यहाँ मेरे को बहुत रीजनेबल प्राइस दे रहे थे वो. मतलब जो मैं ऑनलाइन दे रहा था उससे सस्ते वो दे रहे थे मेरे को प्राइसेस. एंड देन आई गेट अ Hmm. फुल राइट अप कि पूरा पीसी बिल्ड का कितना प्राइस होगा. मैं उनको पूरे कंपोनेंट्स बताया. मैं बोला एक
सिंगल फैन वाले बोलते नहीं नहीं, सिंगल फैन तुम दो डुअल फैन लो, हम प्रोवाइड कराएंगे तुम्हें सेम प्राइस पे डुअल फैन इफ यू गेट अ फुल बिल्ड। मैंने बोला 650 वॉट, बोले तुम्हें 750 वॉट दूंगा मैं ऑफ द बेटर कंपनी इफ यू गेट अ फुल बिल्ड हमारे यहाँ से। एंड द एंड ऑल्सो पूरा केस उनने बताया कौन सा होगा, वो पूरा बिल्ड करके मेरे सामने कभी कभी दे देंगे इफ आई गेट अ फुल बिल्ड फ्रॉम देम। आई वॉज गेटिंग स्केप्टिकल कि इतना अच्छा कैसे हो रहा है ये। देन Hmm. आई कॉल माई अंकल, मैं उनको बताया कि इनके यहाँ ऐसा ऐसा है। मेरे अंकल ने बोला कि पूरे इंडिया में सबसे सस्ता जो ये सब कंप्यूटर पार्ट्स है वो मुंबई में मिलता है, और मुंबई की एक पर्टिकुलर कोई शॉप है, वो उनके जानकारी में है, वो पूरे इंडिया में सबसे सस्ता देता है। ही कैन जस्ट कॉल हिम एंड कंफर्म कि इन सब के प्राइसेस क्या चल रहा है जो जो इनने बताया मेरे को। Hmm. सो ही कॉल्स वहाँ पे उनके जो भी कनेक्शन होगा मुंबई में। हमारा प्लान ये था कि अगर मुंबई में अबाउट 10,000 रुपीज सस्ता पड़ रहा है इससे, देन विल अरेंज सम वे कि हम वहाँ से यहाँ पे लेके आ जाए पीसी को, वहाँ के कंपोनेंट्स यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूटर से शिप करा दे और फिर यहाँ पे आके बिल्ड करवा ले उसे। दैट वाज आवर Hmm. प्लान। Hmm. बट ही कॉल्स हिम एंड टर्न्स आउट कि लाइक इट इज चीपर इन मुंबई, हमें हमें को पार्ट्स यहाँ पे पता है, बट इट इज ओनली अबाउट 3 or 4 thousand डिफरेंस, नॉट दैट Hmm. मच। एंड सो इट लाइक इट इज नॉट वर्थ इट कि हम पूरा मुंबई से शिप करा के पार्ट्स लाए, राइट? एंड अगर Hmm. इतना सा डिफरेंस है देन यू वुड रादर जस्ट यही के सामने सामने बिल्ड करा के ले लो। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जैसे मैं बताया ना, रैम और एसएसडी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जीपीयू के प्राइसेस भी फॉर द सेम रीजन बढ़ रहे हैं कि जीपीयू भी लाइक उसमें यूज होते हैं ना वो कंपोनेंट्स वो सारे, सो उनके प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। सो जस्ट बिकॉज वी न्यू कि हाँ यहाँ पे पूरे जो प्राइसेस है इट इज़ रीजनेबल इन फैक्ट, और पूरा बिल्ड करके दे रहे हैं एंड सब ठीक लग रहा है, तो ही सेड कि हाँ तो वहाँ चलेगा सिल्वर वन, यू कैन जस्ट गेट द पीसी। एंड आई वाज लाइक ओह, बिकॉज आई वाज प्रेटी सेट ऑन कि मेरे को यही प्रोसेसर चाहिए, मेरे को यही जीपीयू चाहिए, दैट आई हैड कंफर्मेशन। बट मेरे को बाकी सब कुछ श्योर नहीं था कि कौन सा मदरबोर्ड लेना है, कौन सा फैन लेना है, कौन सा कूलर लेना है, सॉरी पावर सप्लाई लेना है, कौन सा केस लेना है। And this Sardaji seemed to like suggest me actually good combination, like the more than what I had planned configuration for the same price. Mm-hmm. तो मैं ले लिया। How फिर much वो did it cost? अभी without adding monitor, keyboard and mouse, Hmm. 1,30,000, And what part of it was, how much did it cost to get it built? ₹0. Wait, what? Yes, it does not cost anything. Wait, what? I was just surprised as well because मैं ये पहले प्री-बिल्ट सॉरी कस्टम बिल्ट ऑनलाइन देख रहा था, एंड देन दे क्लेम्ड कि इनका बिल्ड का कोई कॉस्ट नहीं लेंगे हम। आई वाज सो सस्पिशियस कि हाउ इज दैट पॉसिबल। आई थॉट कि ऑनलाइन वो स्कैम कर रहे हैं। बट मैं फिर नीचे पीसी एक्सपर्ट में आके पूछा, दे सेड द सेम थिंग कि दे वोंट कॉस्ट एनीथिंग फॉर बिल्डिंग इट। एंड सरदार जी भी सेम चीज बोले। सो अपेरेंटली इफ यू गेट अ पीसी बिल्ड दे डोंट like take any extra charges as long as you are buying all the components from them. So basically, you know how if you buy something in bulk, it like तुम्हें cheaper price पड़ता है. I They apply the guess. same concept here कि if you are buying all the components, like उन्होंने कहा कि दो option होता है, either you buy components from us, तो if you like bring components from somewhere else, they won't do this for you. But if you are buying all the components from the same shop, they provide ये सर्विस कि वो पूरा बिल्ड करेंगे, तुम्हें पूरा उसका वो 1 साल की सर्विस फ्री देंगे कि लाइक कुछ भी प्रॉब्लम आती है, दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आके हमारा पार्ट चेंज कराएंगे और उसकी वारंटी क्लेम करना है, दे विल कॉन्टैक्ट द कंपनी नॉट अस, वी वोंट हैव टू इंटरेक्ट विद द कंपनी, दे विल इंटरेक्ट विद द कंपनी एंड उसका पूरा सर्विसिंग कराएंगे अगर कुछ इशू आता है 1 साल तक। That sounds like a pretty good deal to me. इट इज, आई वाज सरप्राइज्ड, लाइक मैं अंडर एक्सपेक्ट करके गया था ये सब के लिए, लाइक
आई वाज़ प्रीटी श्योर आई वाज़ गोइंग टू गेट स्कैम्ड एंड सरप्राइज्ड लाइक अभी तक मेरे को कोई एविडेंस मिला नहीं कि मैं स्कैम हूँ। Yeah. व्हाट्स सरप्राइजिंग Yeah. इज़ कि ये सेम प्राइस पे मेरे को वो मिल रहा था, लेनोवो का एलओक्यू मिल रहा था, व्हिच वाज़ लाइक अ लैपटॉप विथ And a shit laptop. एंड अ शिट लैपटॉप दैट्स like this is a really big upgrade over that. Yeah. Are you also planning to, I mean, get a lightweight laptop at some point? Not right now. I think my laptop is fine. I don't travel that much, and even if I travel, I never carry my laptop with me. I Mm. don't see the point of getting a laptop right now. Will you also? And how many screens are you planning to get? How many monitors are you planning to get? Uh, that जैसे पूरे सैटरडे को मैं पीसी का वाला काम कराया, आज मैं दिन भर पूरा इसका मॉनिटर वाला काम करा। I पूरा रिसर्च कर रहा था मॉनिटर के बारे में। I went to 6 different places as I like ranted on Mm. the group chat and किसी के पास मॉनिटर नहीं है। Nobody has monitors for some reason. सिल्वर मॉल में हो सकता हो बट उस दिन मैं I was a little too tired to like check monitors and stuff Mm. and संडे को कॉल बंद रहता करके है भी सिल्वर पूछ मॉल। सकता है आई गेस. I did call आज ये बिकॉज मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था मेरे को दो के अच्छे लगे। एक तो बेंक्यू का एक पर्टिकुलर मॉनिटर रियली लाइक्ड एंड एक एमएसआई का। These two and I'm more set on BenQ but BenQ का I don't know यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर और इसका वैसे अमेजन में है। आई थिंक यहाँ पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर मिले ना मिले मैं अमेजन से ऑर्डर करूंगा तो कुछ ना कोई तो लाके देगा ना। वो अमेजन में कैसे अवेलेबल है वरना हाउ डज But दैट वर्क? what? लाइक कोई एक आइटम है वो अमेजन में अवेलेबल है बट उसका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए राइट उस इफ दैट प्रोडक्ट इज ही अवेलेबल I mean, और लाइक do you know that a lot of the times, पहले तो it doesn't come from your city. हाँ बाहर से शिप होके आता है बट लाइक जैसे And दूसरा, a lot of the times Amazon keeps stuff in their warehouse. हम्म, पता नहीं They आई distribute गेस them themselves. yeah but I was like thinking of like getting it like from a offline shop just because like I have a point of contact because मैं इसका BenQ का ही मैं वो पढ़ रहा था एक्सपीरियंस पढ़ रहा था एक बंदे का उसने ऑर्डर करा अपना ये स्क्रीन मिल गया सब बढ़िया है बट इट हैज अ डेड पिक्सल ही कॉन्टैक्ट्स इनको कि भैया इसमें डेड पिक्सल है दे से ओके वो एक इंजीनियर भेजते हैं ही मेक श्योर कि तुमने डेड पिक्सल नहीं करा है कुछ तोड़ ओड़ के वो एक्चुअली में उसके जो आया है प्रोडक्ट उसमें डेड पिक्सल है वो बोलता है कि हाँ एक्चुअली मैं इस प्रोडक्ट में डेड पिक्सल है ही रिटर्न सेट उसका पहली बार तो मॉनिटर आने में 15 दिन लगा था फिर रिटर्न हुआ अगला मॉनिटर आया 25 दिन बाद एंड द न्यू मॉनिटर ऑल्सो हैज अ डेड पिक्सल ही कॉन्टेक्ट्स अगेन कि ये जो रिप्लेसमेंट आपने भेजा है इसमें डेड पिक्सल है वो बोलते हैं ओके वो रिटर्न कर दिए एंड अभी तक वो उनका नया रिप्लेसमेंट नहीं इवन दो दे सेट कि एक हफ्ते में आ जाएगा वो अब 3 हफ्ते होने को आ गए हैं उसको और उसको अभी तक रिप्लेसमेंट नहीं आया सो लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग राइट इफ यू जैसे तेरे को पता ना पीसी का इफ आई हैव अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरे इसमें पीसी में कोई प्रॉब्लम आती है आई कैन जस्ट डायरेक्टली कांटेक्ट देम एंड दे विल लाइक हैंडल एवरीथिंग आई That's वांटेड टू हैव true. दैट फॉर विद दैट मॉनिटर टू कि यहाँ पे सीधे अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो आई विल हैव अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कोई प्रॉब्लम आती है तो Hmm. But how many are you planning to buy? अभी तो एक ही इट Hmm. इज क्वाइट एक्सपेंसिव अभी जो मैं देख रहा हूँ इट इज लाइक 26,000 Oh, what the fuck? That's expensive. या Maybe buy one cheap monitor. आई मीन इफ आई एम बाइंग अ लाइक मेरे पास एक पावरफुल पीसी है व्हिच कैन प्ले हाईएस्ट रेजोल्यूशन में गेम्स एंड इफ आई यूज अ चीप नहीं, मॉनिटर इट कैन नॉट नहीं, यूटिलाइज नहीं. इट What I'm saying is maybe buy the second monitor cheap. I think right now I don't know if I can like really Yes, yes. utilize the second monitor but हाँ that is Webcam an खरीदना option मत भूलना. what the hell
क्या करना चाहिए? स्ट्रीमर बनाना चाह रहा है मेरे को। तेरी शक्ल कैसे देखूंगा? वेबकैम तो सस्ते में मिल जाएगा मेरे ख्याल से। Yes, just ठीक order a ठाक। random webcam from Amazon, man. तू उसे रिसर्च मत करना. ओके, तो मैं मॉनिटर देखा एंड कॉल करा। एक जो बेनक्यू का एक कोट ऑन कोट डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर, सप्लायर इज द करेक्ट वर्ड, उनसे पूछा, वो बोला आउट ऑफ स्टॉक है। वो कांटेक्ट करके प्राइस बताएंगे मेरे को। आई सेड ओके। एंड पता नहीं, देखता हूँ अभी क्या होता है इसका। मेरे को वो मॉनिटर ठीक ही लग रहा है। मेरे को लग रहा है वो ना दे तो अमेजोन से मंगाऊं या फिर एमएसआई वाला देखूं। आई डोंट नो, आई एम नॉट टू श्योर। Hmm. बट ये मॉनिटर है। फिर कीबोर्ड, लाइक डू आई नीड टू पे दैट मच अटेंशन टू कीबोर्ड? बिकॉज I जब मैं mean, नहीं कह रहा कीबोर्ड पर टेंशन मेरे लैपटॉप के लिए, इतना बकवास वाला कीबोर्ड आ गया मेरे पास एंड आई रियली हेटेड यूजिंग दिस, सो दैट and नाउ आई एम अ Varun लिटिल। told me that you really liked using his mechanical keyboard. Yes, it is a really nice keyboard, but it is like overkill for my standard. Is it an expensive keyboard? Yes, that's How a much? mechanical keyboard. Of course, it is How much expensive. did it cost? I don't know, but it was expensive. What? कॉलेज Let, में लिया था, मेरे को याद नहीं कितने का पड़ा था उसको। let me ask him. Where is Varun? Back हाँ, room, boys. बीमार पड़ा है वो बेचारा आज. Something bizarre happened with Varun apparently. उसके workplace में. Did he क्या tell हो गया? you? नो, Uh, उससे बात ही नहीं हुई मेरी। Some person's uh, relative or something died in the हाँ, office. In the office, इन दी somebody's. ऑफिस। नहीं नहीं. Somebody in the office has a dead अच्छा, समझ। relative. ओके ओके, या गॉट इट। Now, I don't know what this person's position is or whatever. Don't think it matters that much, but the HR has told everyone in the office that they all collectively need to go to Tamil Nadu to attend the Tervi of this person's relative. What the fuck? What? हाँ? Yes, I had the same reaction. Like, this is so bizarre. Does that person want those people at his relatives' Tervi? I don't know the dynamics, but like, this is so weird. Yes. He's traveling to Tamil Nadu. Wait, he has to agree on it? He has to, and I think Abhi he was very stressed because ये बीमार पड़ गया आज, and I think maybe उसे कल जाना है or something, and he Wait, वो is the बीमार पड़ गया and now he has to tell them that वो travel? बीमार है, नहीं जा सकता वो तमिलनाडु 6 घंटे ट्रैवल करके And किसी like the की. company is paying for the travel? I've I mean I hope so, but like it the I'm what I'm sure of is that the company is not paying for the time he's spending on that thing. हाँ. What the hell? Wait, वो कह रहा what? था पहले उसे संडे को बोल रहे थे संडे को दे ट्रैवल टू तमिलनाडु एंड Like अगर वो पर्सन पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डेथ होती, देन आई कैन इमेजिन कि हाँ नो यू आई कैन कैन नॉट से। still cannot imagine man. लाइक This एटलीस्ट लाइक you नॉट 13वीं में जाना अलग चीज है, बट लाइक
just to pay respect कि हाँ, let's have a minute of silence for this. Yes, yes, That's what that's you the do, right? reasonable. Yeah, you like. Why would you it force everybody to go out to a stranger's relatives? There we. How many people are going? Like सिर्फ उसकी team या like I don't know, man. what You the hell? have to ask him for details. This is such a strange story. I really want more information on this. Yeah. We will update on this story on the next podcast if I remember to do so. Yes. I will. Like this is one of the most bizarre workplace things I've heard. What the hell? It What sounds would like one you of do the in this situation? Like the reason he's also stressed is because he wanted to ask the HR to move to another project because I think his project is about to be over and he needs to uh, choose between. Uh, he wants to be able to choose what project he goes to, so he wants to stay on the good side of HR. He didn't want to uh, fight them about it. So, what would you do in this situation? Uttu? that's hmm. Like ideally, of course, if I'm sick, I will not force myself to go on a journey to Tamil Nadu. like, And like, the best thing, I guess, is just to be professional and be direct with the HR. Ki, like, I am sick, I cannot go there. no, Even imagine if that it, you are not sick. Imagine that you are not sick. hmm. Then I will like to talk to other employees जिनको force कर रहे हैं वो. If a single person says, maybe it will uh, not have that impact. But like if multiple people are like against it, it उस आदमी से 12 घंटे ट्रैवल करा रहा. like of course we are sympathetic to that person, but that doesn't mean कि ऐसा भी नहीं कि उनके जाने से कुछ फर्क पड़ेगा. वो जा चुका है वो. जो जाना था उसको. Like what the hell? You're not even helping anybody with anything. It's so bizarre. I don't understand it. 5,000 का है उसका कीबोर्ड. Damn. Mm. Hmm. This kind of shit How? like Yeah. makes me really want to like have a backup. कि किसी दिन if I just lose my marbles, I can just resign on the spot. Yeah. Yeah. Now that you can start working on that game design. That like when I was like thinking of getting a PC or laptop, that was one of the main objectives of getting a strong PC or laptop to like have the Talking about headroom. Yeah, making a game, I have to start learning to code again. like for that sole purpose or some other reason. Uh, uh, need to start learning JavaScript. I've never Uh, used JavaScript because I need to be able to use it to design experiments. Uh, experiments in what? yeah, for the study I'm doing. You like for example, if you're doing some eye tracking experiments, you're showing objects इधर से उधर जाते हुए. You're designing them in a certain way for certain websites to be Uh, to function on. You do that in JavaScript. I have never done this before, so I don't know the details of it, but I need to start doing that.
JavaScript is a good language to learn because first of all it's the most popular language. Second of all, yeah, it is like direct app, like क्या बोलेंगे इसको, you see the output directly यहाँ पे if you like implement whatever in JavaScript. Hmm. uh, ऐसा तू बताया उस टाइप से, yeah. And I don't think it is that much difficult. I think JavaScript is generally considered like Yeah, somewhat that's what I heard. easy to learn, and that's How good. much did you pay for Windows? Nothing. You didn't pay anything for Windows? No, it was No, I free. don't believe you. What the fuck? I'm not joking, man. Windows costs money. But they gave it for free. Dude, this is weird. It is. I don't understand. Where did you get scammed? I am yet to find out, man. I have मेरे पास पूरा बिल रखा है एक एक चीज का क्या है, एंड हर Wait, पार्ट उसमें का हाँ बिल में विंडोज नहीं है? नहीं. What टू the बी fuck? फेयर, जो मैं प्री बिल्ड देखा था उसमें भी नहीं था विंडोज का कॉस्ट. That is weird. क्योंकि hmm, there it is. Uh, R79700X. What is this? Huh? Oh, that's processor. CPU. Ryzen Oh, 7. acha. Then motherboard, I guess. Then the GPU, air collar, iceberg, That's the fan. TV tuner. They installed Windows खुद से. हाँ, उनने पूरा सेटअप करके दिया मेरे को, मतलब पूरा सारे इंस्टॉलेशन जो करना होता मेरे सामने सामने बैठ के. Was it a pirated Windows? आई डोंट थिंक सो. उनने पूरा कोड डाला उसमें प्रॉपर. ही हैड लाइक वो एक कोड का स्लिप लेके आया कि इसके अंदर दे हैड द कोड्स. एक को करना चाह रहे थे बट उसका एक की थोड़ा सा ऐसा ब्लर्ड था, दिख नहीं रहा था क्या लिखा हुआ है. सो ही कॉल्ड एंड आस्क्ड फॉर अनदर की. He got another key. He input that and it was unlocked. And during installation, it said Windows 11 Pro. What the fuck? Yeah. That is weird. Huh. You have 16 GB VRAM. Yeah. Damn. Uddu boy. What are you planning to play with this much power? Genshin. मैं आते साथ ही Oh, Genshin डाउनलोड करा. asshole! It, 26,000 का मॉनिटर गंजन खेलने के लिए खरीद रहा है. you know what? What's weird? मैं जैसे गेम को इंस्टॉल करके चालू करा, it lagged for 2 frames. like 2 बार लैग करा वो गेम चलते चलते. Did your heart drop? No, I just assumed कि वो नेटवर्क के कारण हो रहा है, and I think that was the case. कितना भी अच्छा जीपीयू ले लूं, I cannot improve my network. I Uh, think it's about time. I think I'll start uh, roping you into the idea of Baldur's Gate now. that game is expensive, isn't it? That's so weird to No, say now, considering I just spent so much money on all if this. we start playing Baldur's Gate, I don't think you'll have to buy it. We have Wait, enough what? people who own it. Or you can just join a family or something. But Oh, that game is still a commitment. oh. Like, is it a long game or what? It's a long game. Hmm.
Man, it's an online long game, so which makes it even longer. We barely have like started playing that Overcooked 2, which we forced Varun to buy. Yeah, wait, I forgot that part. Why are you such an asshole, Uddu? You need to keep aside your obsession with buying the new monitor and give some time to Varun. हाँ, अब तो वीकडेज रहेगा वीकडेज में आई डोंट नो आई विल ट्राई दो मैं मेरे को वर्क में भी आई हैव अ लॉन्ग rant I can go on to but I will not do that. Hmm. Just to give you an overview मेरे सारे टीममेट्स छुट्टी पे हैं including my seniors and manager. Why? मेरे मैनेजर तो आई गेस जेन्युइन कोई ऐसी वेकेशन पे गए हैं बट मेरे सारे टीममेट छुट्टी पे हैं बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम जो अभी सैटरडे संडे को हुआ होगा विच इज़ कॉल्ड विंग्स जो टीसीएस का इंटरनल एग्जाम है एंड इफ़ यू क्लियर दिस एग्जाम तुम्हारी सैलरी डबल हो जाती है. What the fuck? यस. Did you not take it? आई कुड नॉट आई कॉन्टेक्टेड एचआर. मेरी सैलरी ऑलरेडी इतनी कि जिसके ऊपर और बढ़ नहीं सकती हूँ ये एग्जाम्स के थ्रू. बट What? That दे sucks. हैव दे उनकी 3.5 है राइट तो वो 7 हो जाती है इफ़ दे क्लियर द एग्ज़ाम बट मेरी 9 है तो लाइक इसके ऊपर फिर ऐसे एग्ज़ाम्स के थ्रू नहीं होता दिस इज़ द मैक्सिमम यू कैन हैव. Man, they उसके are बाद फिर giving low salary. या तो मैं पूछा मैम से फिर क्या कर सकता हूँ मैं. मैम बोली हाँ मैं बताती हूँ तुम्हें एंड देन शी नेवर रिप्लाइड बैक. उसके बाद आई थिंक बस वो सैलरी इंक्रीमेंट्स. मुझे भी बढ़ा दिया, मैं कैसे बढ़ाऊँ? TCS is infamous for like really low salary increments. इसलिए everybody just switches to another company after like getting 2-3 experience years of experience. Are you planning to switch? I am in 2-3 years sure but not in 1 year. वो like वैसा भी करते हैं लोग एक साल में switch कर जाते हैं but Are you I, also huh? are you also planning to switch kind of what you're working on? Or do you still No, yeah, that was what I was getting on. कि पहले मेरा क्या कॉलेज में फोकस था कि पूरा जो एंट्री एक कंपनी के अंदर एंट्री के लिए चाहिए होता है राइट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स that I wanted to really master and I did. I am like almost confident in my ability to clear any ये जो एंट्रेंस एल्गोरिदम वाले होते हैं इवन फॉर लाइक बिग कंपनीज लाइक गूगल माइक्रोसॉफ्ट आई थिंक इफ आई इन्वेस्ट इनफ टाइम आई कैन क्लियर इट विद इन लाइक एन ईयर इन सबको what the इंटरव्यू भी. fuck? या बट व्हाट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑन इसकी जब मैं टीसीएस ज्वाइन करा एंड द एक्चुअल वर्क आई हैव टू डू आई फील वेरी इनसिक्योर अबाउट दिस कि आई काइंड ऑफ समटाइम्स फील कि आई एम नॉट दैट कॉम्पिटेंट मेरे को बन नहीं रहे. आई थिंक आई हैव टॉक्ड अबाउट इट अ लिटिल बिट यहाँ Yeah. पे कि लाइक आई हैव वो एंट्रेंस वाला नॉलेज ये पजल सॉल्व करना एल्गोरिदम सॉल्व करना दैट आई कैन डू बट द एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब एक्चुअली जो मैं कर रहा हूँ उसमें मास्टरी फील करना दैट आई फील इनकॉम्पिटेंट ऑन बिकॉज आई हैव रियली क्या बोलूँगा मैं थ्योरेटिकल टाइप का एक्सपर्टीज आई एम लिटिल लैकिंग इसमें आई कैन नॉट रिटेन इंफॉर्मेशन आई. Do you think that working this job at TCS over time, will it That's help what I improve am your hoping. confidence? Yes, that is what I'm hoping that at some point ये इतना मेरे सोल के अंदर घुस जाए ये पूरा चीज़ है कि हाउ बैकएंड वर्क्स हाउ ऑल ऑफ दिस वर्क्स दैट आई लाइक हैव I develop natural mastery over on these topics that I can confidently say that yes I know everything about SQL or Java backend at least backend kind side of things I can be confident on. I kind of want that because even in TCS I have been like TCS is a service based company like it is like the lowest of the low tier company among different companies but even here if I'm feeling uh,
लाइक इनसिक्योर, देन आई एम गोइंग टू फील टेरिबल इन एनी कोई बड़ी कंपनी निकाल के, राइट? वहां पे गया मैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। That's true. I think you'll figure it out. I think you're a very smart guy. आई डोंट थिंक सो। तेरे यू सोचने नो, से क्या होता है? मैं यहाँ पे एक क्लाइंट का भी फ्राइडे को और थर्सडे को, उसके पहले मतलब ये दोनों दिन इश्यूज सॉल्व करने का ट्राई कर रहा था। एंड मैं वो ऑकवर्डली वहां पे क्लाइंट साइड पे वेट कर रहे हैं मेरा कि हाँ मैं उनको बताऊंगा क्या रिजोल्यूशन होता है, क्या कर सकते हैं इसके लिए, कैसा है। एंड आई जस्ट ब्लैंक आउट कि आई जस्ट से कि आई डोंट नो क्या करना है इसके लिए, कैसे करना है। एंड द गाय ऑन देयर साइड इज सजेस्टिंग कि हाँ अब इसमें ये ट्राई करो, वो ऐसा करो, विच इज माई ड्यूटी। I don't know how to explain this, but I don't feel confidence in what I'm doing right now. I I think इसमें को बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना होगा, पढ़ना पड़ेगा अलग से, and maybe then I'll feel confident on this. I'm sure you'll get there, Uddu. Yeah. Hey, I haven't talked about my encounter with Pranath, right? Pranath visit करा था उसका experience, It or was have an I? encounter, huh? Not encounter, क्या बोलेंगे? Visit करा था मेरे को एक दिन के लिए वो। Yeah. Yeah, I don't think I know what you guys did. I'm not sure. Yeah, I think हम जब record करे थे उसके next day पे आया था वो। So it's been a while, but he visited me at the most unfortunate time because उसी टाइम पे मेरे मामा मेरी मम्मी बाहर गए हुए थे, and I had to stay with my grandpa. So even if I was free in the evening, I could not go out because मेरे grandpa को कोई ना कोई चाहिए उनके साथ में पूरे टाइम पे. So he had to visit me at my home. आता है वो एंड इट वाज रियली फनी एक्चुअली। मैं उसको अपना एड्रेस भेजा था एंड ही सेज कि हाँ वो शाम को 7 बजे तक आएगा एंड थोड़ा सा डिले हो जाएगा। ही सेज कि थोड़ा सा डिले हो जाएगा। आई सेड ओके, और मैं वहीं पे हॉल में बिस्तर में बैठ के मोबाइल पे कुछ कुछ देख रहा हूँ एंड आई गेट अ टेक्स्ट मैसेज समथिंग लाइक बाहर आया ऐसा समथिंग, एंड आई लुक, ऐसे बाहर देखता हूँ खिड़की से, उसका ऐसा सर पॉप करके वैसा देख रहा मेरे को वहां से विंडो के थ्रू। इतना फनी था लाइक बट डिड नॉट एक्सपेक्ट कि एकदम से वो ऐसे आ जाएगा मेरे विंडो के सामने एंड लाइक आई Wait, एम, तेरे विंडो के सामने था वो एकदम? नहीं मतलब वो ऐसे करीब जैसा कि खड़े नहीं हो रहा था, बट लाइक मेरे उसके घर की बाउंड्री वॉल है और उसके पीछे मेरे हॉल का विंडो है। इट जस्ट हैपेंस टू बी परफेक्टली अलाइन कि अगर वो घर के बाहर ही खड़े होकर मेरे को बाउंड्री वॉल के थ्रू देखेगा विंडो पे, तो उसको सीधे मेरे अंदर मैं बेड पे बैठा हुआ दिखाऊंगा। इट जस्ट हैपन टू हम्म, अलाइन लाइक दैट हम्म, एंड मैं उसको देखा नहीं हो, लाइक ठीक है वेबकैम के थ्रू देखा हूँ, बट इन पर्सन में उससे लाइक आफ्टर 5-6 years बाद मिल रहा हूँ, राइट? सो इट हम्म। वाज जस्ट सो सरियल कि मैं ऐसे ही देख रहा हूँ विंडो के बाहर, प्रणत झांकता हुआ दिख रहा है मेरे को Yeah. आई मीट हिम, आई आके बैठता है, मैं उसको बेडरूम में लेके जाता हूँ क्योंकि हॉल में मेरे नाना और उनके दोस्त बैठे हुए थे। ऑकवर्डली बैठे हुए हैं हम एकदम। तेरे नाना के दोस्त हैं? एंड हाँ हमारे नेबर है वो, उनसे इंटरेक्ट ऐसे ही करते रहते हैं बातचीत, हाँ। उनको कंपनी देने के लिए। तो वी टॉक अ बिट अबाउट स्टफ एंड थिंग्स, देन वी डिसाइड कि क्या करना है। एंड आई हैड ब्रॉट जो हम तुमने मेरे को बर्थडे पे वो दिया था, हम्म। वो बोर्ड गेम, मैं वो लेके गया या था या वहां पे बिकॉज मैं वरुण क्या ले जाना भूल गया उसको सो आई थॉट कि ठीक या है दिस ओकेशन में लेट्स ट्राई दिस गेम आउट दिस एंड you know even when I opened it I tried to read its instructions, but I
didn't quite understand it. I thought कि हाँ कोई मेरे साथ आएगा खेलने को, then we'll understand it together and play. But हम वहाँ बैठे बैठे पढ़े इसका इंस्ट्रक्शन, then we watched a video tutorial इसका, and we still did not understand anything कि इसको कैसे खेलना है. Oh, And हमने सोचा कि क्या करें, then we kept it aside कि ठीक है बाद में देखेंगे इसको. And then we decided to let's order something खाने के लिए बाहर से, because we cannot go outside, right? We have to stay there. Then we look थोड़ा थोड़ा, and there was this pizza place. What was its name? Olive something? oh, I don't remember exactly. But कोई एक pizza place थी. वहाँ का उसको अच्छा लगा. So we ordered a pizza and a bread something. What's that called? Bread, garlic bread. garlic bread. Yeah, that. Yeah, Pranay does seem like a garlic bread kind of guy. He ordered it. Yeah, yeah. And it just happens so कि हमारे घर पे एक बचा हुआ नूडल्स रखा हुआ था, एंड फ्राइड राइस, बट वी डिड नॉट ईट फ्राइड राइस बिकॉज नूडल्स हमारा पेट भर गया था, बट हमारे पास रखा हुआ था, वो भी गरम कर दिया. एंड देन उसके लिए हम कोक खरीद के आ गए बाहर से, बट मेरे को सर्दी थी उस टाइम पे, दैट्स व्हाई आई मेड सूप. सो नाउ वी हमारा तो पैलेट मतलब देख खाने का क्या है. वी हैव पिज्जा, वी हैव गार्लिक ब्रेड, देन वी हैव नूडल्स, then we have soup, hot and sour soup, and we have Pepsi. This is what we we are eating. And फिर हम सोचे कि हाँ खाते खाते कुछ शो वगैरह देखते हैं. So we put on Netflix, and he suggested we watch House of MD. I did not know about this show. Have you heard of this show? Yeah. You seem to make an expression like you have been through this or No, I've something like not that. been through this. I just find stuff like that annoying. Huh? Why? It's like Sherlock fantasy of a doctor. Sherlock Holmes fantasy of a doctor. Oh, हमने पूरा एपिसोड खत्म नहीं कर पाया था पहला वाला, बिकॉज रात होने लग गई थी, सो लाइक ही हैड टू गो. बट जहाँ तक मैं देखा था इट लुक्ड समवॉट इंटरेस्ट. आई डिड नॉट इवन अंडरस्टैंड कि शो किस बारे में एट दैट पॉइंट, बट इट लुक्ड फाइन. It's like this really smart doctor, eccentric doctor. He outsmarts everybody. That's हम्म. I've never watched it, but I know people who watch it. हम्म. ओके ओके. Yeah. ये 2 हफ्ते हो चुके हैं ये इनकाउंटर का. आई एम प्रोबेबली मिसिंग समथिंग जो हमने साथ में करी थी. हाँ. But yeah, it was a nice get You had a together, I think. pretty slow get together, it seems. I The think last. it is like kind of the best kind of get together, because हम बाहर जाते then you are kind of even though you are doing things, you cannot really sit down and talk properly. But when you are at home, you can like mainly focus on that. What the And hell are you doing outside? I mean, you are talking and stuff, but I think that's easy to do with you, I think. But I was not very comfortable with doing that with Varun. I think he was. I think I felt that with Pranat as well. कि अगर कोई किसी को मैं अपने घर लेके आया हूँ, then I have to entertain them, kind of. Even Hmm. though when I went to Varun's home, I like Varun ये same चीज feel कर रहा था, and I didn't want him to feel that way, because of course like that is not an issue with us. But Hmm. when somebody comes at your home, you do feel pressured कि they should not get bored or anything like that. हाँ मैं तो बेशर्म हूँ एकदम.
And that's a good thing. Like you have to kind of get out of that anxiety and understand that it is okay to be bored and I just mean, talk casually. especially when you kind of know that you have very small amount of time, when you're very aware of that time, I'm sure you get more Uh, uh, weird about it. yeah, so we only met up for a single evening. After that, I think he went to Pune. Oh, Yeah, he came to Indore to sell a car, which he drove there I from know. Karachi. Yeah, that's why he went to Indore. Yeah, that was my encounter with, and not encounter, yeah, meet up with. That's all. Po- I make it sound but so weird. talking about him like he's a Pokemon. हम्म, अब तू बता, मैं इतना सारा अपने बारे में बता तो दिया, तेरा क्या चल रहा है? Yeah, bunch of stuff. I've been quite busy recently. ओहो. Uh, I don't like being busy, honestly. I don't like having a lot of stuff to do. हम्म, I guess I like having work to do, but I like having work to do related to a single thing. If हम्म, there are multiple things that I need to work on, even though it's the same amount of work distributed between different things, I don't like it. I know, Um, right? That, when I just like said कि वो कंप्यूटर के लिए मैं था, I could not focus on two things at work. मतलब हाँ कि मैं कंप्यूटर में देख रहा हूँ, cannot shift my focus from that to my office work, right? Is that the same yeah, reason for with you? I guess yeah. Because like it's end of the semester is approaching, right? So assignments are piling up and stuff like that. This hafta I Hmm. had to do these presentations, and I'm usually very anxious about presentations. दो presentations करनी थी मुझे, कुछ assignments करने थे, and now that I'm also applying for a PhD, मुझे PhD के लिए application की तैयारी करनी थी, इसके लिए I had to figure out LORs किससे लूँगा मैं, Hmm. and that is the most stressful part, to like arrange LORs, Hmm. like if that depends on somebody else saying yes. So uh, yeah, but thankfully वो part अभी मैंने figure out कर लिया है. Oh, I've, do you have I had any to, like particular person? yeah, I had to arrange three LORs, right? Oh, So damn. yeah, which is quite a lot. So one is the professor I'm working with right now. He's a really great guy, and uh, he agreed to write a letter of recommendation for me. He also like very nice about it, and he said he'll also help me with uh, my SOP if I need any help, and I'm also taking a Wait, bit what of is his SOP? guidance. Statement of purpose. Oh. Yeah, he will also, he's also kind of helping me decide where to apply, even though I want to apply here too in this university, the lab I'm working in right now with him Hmm. here, because this is a really good lab Hmm. in a not so great university, which honestly it doesn't bother me. Hmm. I just care about the lab. uh, but it's also kind of wise to apply to other places, right? uh, to Wait, why is it have wise? options. Yeah, but if I don't get a PhD, I should have some options, right? I mean, you know, Huh?
PhD is kind of almost like it comes with a degree of responsibility, right? Because you're also doing it job as a part of it. You're teaching assistant or something, so they are also paying you for it. There's funding involved in PhD and stuff like that. So No, you said it is wise to apply to other places. That other places as well. Not it is wise oh, to not just apply in this एक जगह पे. uh, Although now that I'm like trying to shortlist universities to apply to, they all seem so prestigious. That I feel weird. I was feeling awkward about applying to one place, and just say like University of Pennsylvania, which is kind of a oh, prestigious university, and my professor is definitely. from there. Oh, Wait, you are aware of it? yeah, and like that is one of the bigger colleges, yeah, universities people target when preparing for SAT, is it not? I Uh, remember people talking about it. yeah, it's a very prestigious university, and I was even feeling awkward about it because there are researchers there. There Mm, who I would want to work with, and like mm, some of my professors' mentors work there right now because he did his PhD master, and mm. I was feeling awkward about applying there because I have to ask this man to write me a letter of recommendation for this prestigious place, Mm. which I Like feel. the Hmm? like in the record letter of recommendation, they like write it specifically for a particular place, or like it is a letter you can use on different places. You usually do not see your letter of recommendation. The way it goes is while Oh, during your application, you put in the contact information of who is writing your letter of recommendation, and they get a link to the portal or something directly. The whoever is oh, writing, yeah, you it's uh, usually yeah, you do not see your letter of recommendation. hmm. Okay. So, Uh, hmm, go on. yeah, so basically, yeah, that's one. The one other is from the Canadian professor I kind of research. I was research assistant for. I was a research assistant for during the summer of my undergrad. Like, who also wrote me an LOR when I was applying for masters. I also asked him for to write me an LOR for this, and the one I'm getting from the person I was a research assistant for at my university during my undergrad. Yes, so, I mean, uh, feel pretty, I guess, confident about these. Hmm. Uh, Now I need to write a statement of purpose and need to decide where I'm going to apply. Hmm. How many universities? Like, can you apply on as many as you want, or like No, you it can costs only? money. It costs money to apply. Hmm. It's like imagine like 5 universities. I'll apply to 5 universities. Hmm. Okay. All the best. Yeah, yeah. So
the project I'm working on is also going pretty smoothly. अभी तक I'm like, oh, I need to आज बैठ के write down the methodology ढंग से of it. I'll do that among other things. The I had to do presentations this week, right? For a class, I had to Hmm. do two presentations. The first presentation I did, and I was very anxious about it. Was uh, and these papers I myself selected for presentation that I'm going to present these papers. Hmm. Professor approved. And while I was reading that paper, Pehla Wala, I was like, I thought I liked this paper and agreed with this paper, and I thought it was an interesting paper. पहले फिर पढ़ते पढ़ते ढंग से thoroughly I was like, I don't agree with this paper at all. Oh, damn. I didn't agree with how they interpreted their results. Which, Hmm. and like it's weird also because I was planning to apply to this guy's lab too. Like the guy who wrote that paper. Yeah, I don't Hmm. think. Because it's to do with language and cognition, and there are a few ways you can approach this thing, and those ways kind of stand opposed to each other. Hmm. Can you do that? Like include that in your presentation? Like if you're opposed to some of its views, can you say So I that in that? was, yeah, that's what I did. Like while I was presenting it, I did the introduction and stuff. And before starting to talk about the experiments they did, I said, I think I need to disclose it before I start talking further that I thought I agreed with this paper when I first proposed it for this presentation, but after reading it thoroughly and thinking about it, I don't think I agree with the interpretations of the results here. Hmm. And the professor seemed glad, happy that I said that, I guess, because she was like, oh, I feel the same way about it. That's nice, I guess. Yeah. So, yeah, I was a little anxious and it didn't go that well, that presentation. Mm, Hmm. the professor could see me struggle, and I was, yeah. Like, she was really nice about it. She, like, recommended about, like, suggested things I can do, and like, she was trying to give me confidence that, like, yeah, I can see you know what you're talking about. You just need to be a little more confident, वगैरह. You know, when you see those pitiful eyes, like when you see those eyes that are sort of pitying you, you can Hmm. sense that that does not feel good. Hmm. Not at this age. My uncle said that he had actually joined a class specifically just to learn how to present and like get rid of his stage fear. Man, your uncle is such a hustler. I know. At first, I thought, ki, like, is that really necessary? Can you just not practice it out or something? But now I think, yeah, that was a good idea. We should probably do that. I think I'll just
It's more to do with, I guess, I just constantly feel like I'm among people much smarter than me around here. Like, I think like this place is filled with very smart people and I don't know anything. हाँ हाँ, अभी थोड़ी देर पहले क्या बोल रहा था मेरे को? तो भाई मैं तेरे बोल रहा था, यू आर अ वेरी स्मार्ट गाय. अबे, we always feel like the people around us are smarter than us. Like that might be true, but that should not make you feel any less confident in what you're doing, I guess. Yeah. Yeah, but one good thing is that because of this fear, I have been attending lab meetings for like the past year. I used to like with my students would present something or talk about papers in the lab, Hmm. uh, and I used to just sit in a corner and mostly just listen to people discuss the paper without asking much questions or bringing up points. I was too afraid to bring up points, and because these people are obviously know so much. Okay, a lot of the times I won't even understand what they are talking about, right? Okay, they are so Hmm. knowledgeable in the field. I was still trying to kind of grasp a lot of the times what they're talking about, but besides that, a lot of it was just me being afraid to speak. Recently, I feel like I've been feeling more comfortable with bringing up points since the time I've started working with my professor, I guess. Hmm. I feel like a more somewhat more integral part of the lab, I guess. After that, I was also looking for. Yeah, I'm also looking forward to my first presentation in the lab this December. Phew. Oh. You do. Like we do weekly lab meetings Fridays and then somebody takes up the responsibility to lead a discussion, and I'm going to present what I'm going working on right now. Uh-huh. Yeah, looking forward to it. All the best with that. I'm sure you will do good. Yeah, I'm looking forward to it. Not that anxious about right now. Probably because before that I need to figure out my PhD stuff. I need to be क्योंकि दिसंबर के शुरू होते ही डेडलाइंस आनी शुरू हो जाती है. Need to Uh, be done with this shit before that. Yeah. when will it start? Like if you get approval from some place, Next like do you fall, have when is fall? I don't know. uh, August के खत्म होते होते. So you will have that like 5 months time, like 3 to months, more like 3 months. Summer का 3 months. oh. हम्म. I अच्छा, फिर don't ये know. सेमेस्टर भी चलेगा आई गेस. Yeah, कब? yeah. हम्म. I ओके. had the option to end it and my master's this semester. If I हम्म. just had taken up one more course, I could just end it here. हम्म. Because अगले semester I need 3 more credits. Three credits is one course. हम्म. But I wanted to. I mean, felt that it is. It was a lot of things, right? It's
I wanted to apply for a PhD. For that, I felt like I had to start working with my professor on this project this Hmm. semester if I wanted any shot at a PhD. But my professor was like, "Okay, but this seems like a very interesting project, but we need time for this. And when are you graduating? Next year." And I said that I'm also planning to apply for a PhD on the basis of which we started this project. Okay, we'll have enough time to finish this if I get into the PhD. Hmm. You know? Academia sounds so fun. I also want to do research on a topic. I mean, yeah, it sounds like a lot of fun. I keep hearing horror stories about how much life is made miserable for people in academia. Hmm. I've not had any bad experiences yet, fortunately. Hmm. Happy for you. Yeah, yeah. Phew. I mean, I think that's mostly what I've been up to. I didn't watch many films either. I've watched Under the Silver Lake. I guess it's a horror kind of movie. It kind of like deals with this conspiracy theorist kind of character, and it has this underlying nostalgia of finding mystery in the world, Wait, where what? when Nostalgia? when you were younger and you were like there were mysteries to be uncovered in the world, you would like, Ah, yeah, we that was like the basis of our storytelling yeah, yeah, shenanigans. yeah, yeah. It's like this very romantic idea of if you just decode something or try to solve some things in the regular world and you'll discover something really impressive and amazing. Hmm. It's, the film kind of has these characters who are grown as people but feel that way and their lives are miserable and it goes in weird directions. I guess it's an okay film. I guess I did not like where it ultimately went because it kind of ended up confirming this person's delusions. Oh, it was actually true. Which is, I feel that it's a weird place to take a film like that. Uh, But yeah, that's the one film I watched. I guess I haven't wa- kept up with a lot of media recently. so weird to listen from you that you haven't kept up with media. Yeah, That man, is I've been really busy. that is my line. I mean, there's also I haven't been able to work much on my YouTube thing, Abhi. I'll probably do it in the summer. Sorry, winter. After chuttiyon mein. And the film you were working on? Oh fuck, I need to edit that too. Yes. By the way, I'm planning Uh-huh. to buy a new laptop too. Ah, what the hell? कौन सा? I'm planning to buy a G14 right now. I'm waiting for it to go on sale on Black Friday G14? or something. Wait, which G14?
Asus का G14, Zephyrus G14. Oh, you really like that one, right? That slim, light one. Yeah, that small laptop. Yeah. Yep, yeah. So I am Uh, confused. I have confused which one to buy, which GPU to buy though. क्योंकि uh, one is like एक मिनट कहाँ गया RTX 5060, right? uh, Which is kind of 1800 का uh. $1800, which goes on sale when it's on a good sale. I've heard that it goes to like $1100 or something around there. Wow, that's like On Yeah, big. and then there's 5070 Ti, which is 24. 5060 and 5060 Ti. There is a big difference with the same models, Ti versions. Yeah, वही मैं कह रहा हूँ, like 5070 Ti, 5060 Ti कोई available नहीं है उसमें, I think. Uh, 5070 Ti, which has much better performance. Like it makes a huge difference because it has 12 GB VRAM as yeah, opposed yeah, to the that's what I was going 8 to GB say. VRAM. That even that 5060 is going to like bottleneck if it's 8 GB. Yeah. But 5070, if it's 12 GB is more than fine. That would work. Does Ti just mean more VRAM? No, VRAM is different. TI is like more power, but there is a huge difference. Generally, it is like said that the TI version is worth it. With TI, it's a little cost increase, but the performance increase is really big. So yeah, the what I'm like वो sale पे जाएगा भी, so it will probably be around like 2000 या उससे ज़्यादा ही, The GPU or the $2000, whole laptop. the laptop. Uh, So, and like I would like to buy a laptop that's future proof and maybe like I won't have any problems with. But I have this another feeling that I don't maybe need that much power. yeah, that might be true. 5070 Ti is like the top of the best kind you can, like the most powerful thing you can get right now. Like No, you only can below get more 5090. powerful. Yeah, there's 5090 I know, but like 5070, like even in my 5060, you can play every game on the planet, like at least at a high setting. Only the difference it makes is with like ray tracing and whatever that is, DSSR, DLR, whatever that's called. But it can still run every single game on available right now. Yeah. So 5070 Ti is going to run like even those games at the highest settings almost. Hmm. But Yes. do you think I'll notice 50, 60 benefits? The thing is, I honestly don't even notice any problems with my current GPU, which is the 1660 Ti. Maybe because I don't play that many AAA games. Yeah, like for me, I faced a lot of issues because my laptop does not have a GPU at all. Uh, And that like yeah, so I'm a little conflicted about what to buy. Yeah, I don't care that much about FPS, I think, yeah, but one as thing much you as. have to look out for, which Uh-huh. I like when I was checking. Oh wait, you are not getting a desktop, you're getting a laptop. Oh, then it's fine. It's the other way around. The 5050 GPU, the laptop has Hmm. better performance than the desktop GPU, the same GPU.
Why? It's just built better, the laptop CPU. What Believe the it or fuck? not. Yes, like I saw पूरा इसका you can look it up इसका लैपटॉप वर्सेस सीपीयू का जीपीयू कंपैरिजन एक एक वर्जन के लिए एंड द 50-50 and even 50-60 one the laptop has Uh, better performance than the desktop one. that is weird. As soon as you get more VRAM, the desktop version like takes the lead, but before that Like the laptop one has like about the same performance as the desktop one. my concern kind of is that from what I've heard, 8 GB VRAM is getting obsolete. Like For AAA games, yes. so, like But for yeah, I'm afraid. you're talking about laptop, right? It things are a little different for it. Yes, 8 GB VRAM is less. Like if you're getting a powerful GPU, but if you're not getting a that much powerful GPU, then it will not bottleneck your 8 GB Maybe VRAM. like the way I should think about it is there's no chance that I'm going to immediately notice a difference, notice any problems with having a 5060. And I feel like the by the time I do notice some issues, I'll probably be kind of more sure of where I am. Hmm. Maybe at that point I can think about buying a PC. Hmm. But in 5060, you did not see any TI option. No, let me look again. Like, no, I didn't see G14 5060 Ti. Maybe it's not there, I guess. I think it's not. Hmm. All they have is Khulda Bhai. Yeah, 5060 is what they have. Yeah, when I was looking at laptops, I was settling with 5060 only, and that seemed like an overkill. Honestly, when I was like checking I a mean, Lenovo what and sucks about it is that, like, it's also the. From what I've read, RTX 5060 इस laptop में खरीदने का कोई. It wasn't an upgrade over last year's model with 4060. hmm. Yeah, actually, 4070 Ti is more powerful than 5060 Ti, from what I read. Uh, but those models are not available now, I think. Yeah. Hmm. Yeah, so I think 5060 is would be a good thing to go for. Yeah. Man, I really hope it goes on a good sale. Black Friday. So Hmm. We'll all get a good setup and then we'll play board games together. I'm planning to, if I get a new laptop, I'm planning to make this laptop into a server. Uh, Uh, Server for what? What are you going to do? server for media and maybe host websites or something. Hmm. Uh, Interesting. like definitely media.
ताकि मेरा लैपटॉप एम्प्टी रहे. Media takes up a lot of space, right? I don't really know much about what you're talking about. I think we can delve into it sometime later. Uh, you got to sleep now. Yeah, I got office tomorrow and a headache. I didn't go much into it, but basically वही मेरे client का एक कुछ अटका हुआ है. पहले मैं पूछा उनसे कि ये इशू आ रहा है, ये पहले चल रहा था राइट? मतलब हम पहले 1 2 3 घंटे से ट्राई कर रहे हैं उसको फिक्स करने का. एंड देन आई आस्क कि हाँ ये इशू ये सर्विस पहले चल रही थी, चलते चलते एकदम से बंद हो गई. वो बोलते नहीं, ये सर्विस कभी चली नहीं, हम पहली बार इसको यूज कर रहे हैं सर्विस को. आई वाज लाइक ओह, तो ये बिकॉज़ अगर एक कोई चीज़ पहले चल रही थी, वो एकदम से चलते-चलते बंद हो जाए, दैट मीन्स कि कोई 1-2 प्रॉब्लम इज़ दैट यू हैव टू फिक्स, और वो फिर से चलने लग जाएगा. बट इफ यू आर सेटिंग अप समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, 15 इश्यूज़ एक साथ आ सकते हैं उसमें, एंड व्हिच सीम्स टू बी द केस. और तुम्हें सब रिज़ॉल्व करते-करते यू हैव टू लाइक पूरा चालू करना पड़ेगा. दैट इज़ मच मोर डिफिकल्ट देन एक जिस सर्विस पहले से चल रही थी, उसके कोई एक पर्टिकुलर एरर को ठीक करना. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मेरे कोई सीनियर थे नहीं मेरे को अवेलेबल इसमें असिस्ट करने के लिए. सो मैं बहुत परेशान होके वीकेंड पे रखा था ये वाला टास्क, एंड आई हैड नो रिजोल्यूशन कि अभी जो करंट एरर है उसके लिए क्या करना है. एंड आई विल हैव टू लुक इनटू इट tomorrow morning, and I'm not looking forward to it. But anyways, enough of that. Okay, then you have fun. Yeah, you too. All नहीं the best बना for था. your PhD Fuck. applications and presentations. Fuck. Yeah. Good night, Uddu. Good night. Bye bye.